Anjali. I am teacher of our school. My subject is English. Today I will explain you lesson number 1 on the farm. Today we will do all exercise of this lesson number 1 on the board. Now we will do hard words. What is the meaning of hard words? It means the word which is little difficult to read. That is called hard words. Like brown, black, white, green, grass, sheep, horse, knee, splish, splash. Now next, fast, quick, mother, skip, jump. Now we will recall all these hard words. Now read aloud me. BROWN, brown. BLACK, black. WHITE, white. GREEN, green. GRASS, grass. SHEEP, sheep. HORSE, horse. NEIGH, knee. SPLISS, splish. SPLASS, splash. FAST, fast. QUICK, quick. MOTHER, mother. DUCKLINGS, ducklings. SKIP, skip. JUMP, jump. So these are all hard words. Now our next topic is word meaning. Now here I have written 3 words. We have to write here meaning. Like, what is the meaning of knee? Knee is a sound made by horse. A sound made by horse. Now next, farm. What is the meaning of farm? Farm का मतलब क्या है? खेत. खेत हम क्यों यूज करते हैं? For growing crops. Next, grass. Grass. What is the meaning of grass? यानी short plant. छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन आपने देखा है ना? Grass. That is short plants. So this is 3 word meaning of this chapter.
Now our next question is state whether the following is true or false. यहाँ पे जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है वो सही है या गलत है. अगर सही है तो ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है. कैसे? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. नंबर 1, द काऊ ईट स्वीट ग्रीन घास. काऊ खाती है ग्रास स्वीट ग्रीन? यस, खाती है. सो आई एम राइटिंग हियर ट्रू. Number 2, the horse runs very slow. Horse क्या स्लो रन करता है? नहीं ना, फास्ट रन करता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? false. Now next, 3 number, the sheep skips and jumps. sheep क्या करती है? skips और jumps करती है ना? yes. So true. 4 number, the duck swims in the sky. duck कहाँ swim करती है? sky में कि pond में? कहाँ पर? pond में. yes. तो यहाँ पे हम लिखेंगे false. So this is our questions true and false. Now our next question is answer the following questions. Now अभी question answers करेंगे हम सब लोग. Number 1, what does the cow eat? cow क्या खाती है बच्चों? Yes, green. So number 1, what does the cow eat? cow क्या खाती है? Sweet green grass. Yes. तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में the cow eat जो लिखा है वो हम आधा इधर लिखेंगे, आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है. सो द काऊ, अभी ईट लिखा है तो यहाँ पे ईट्स आ जाएगा, एस लगा देंगे. द काऊ ईट्स स्वीट ग्रीन ग्रास. Now students, it is easy for you to write question answers like the cow eats sweet green grass. आधा हम क्वेश्चन में से लिख लेते हैं, बस हमें स्वीट ग्रीन ग्रास ही लिखना है आंसर में. सो नंबर 1 आंसर इज कंप्लीटेड. नाउ सेकंड, व्हाट कैन द हॉर्स डू? हॉर्स क्या करता है? हाँ, रन्स वेरी फास्ट. तो हम ये लिखेंगे द हॉर्स runs very fast. The horse runs very fast. So this answer also completed. Next, number 3. What does the sheep says? sheep क्या बोलती है? क्या बोलती है बच्चों? बा. तो हम यहां से लेंगे द sheep. The sheep says कैसे बोलती है? बा. The sheep says बा. Now 4 number, what do the mother duck and her ducklings do? क्या कर रही थी मदर डक एंड उनके बच्चे? क्या कर रहे थे? स्विम इन द पॉन्ड. सो हम यहाँ से लिखेंगे द मदर डक एंड हर डकलिंग्स. ये पूरा हम यहाँ पे कॉपी करेंगे. द मदर डक एंड हर ducklings क्या कर रहे थे? swim in the pond. So now our question answer is finished. Now our last topic is rhyming words. Student, now tell me, number 1, run.
Run का rhyming word burn. B-U-N burn. F-U-N fun. Burn fun. Now number 2 last. Last का rhyming word. Tell me. Fast. Past. 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 Now 3 number jump. Jump का rhyming word. बोलो बोलो. Bump. Next lump. Bump. Lump. Now number 4 grass. Grass का rhyming word. Class. Brass. Class. Brass. Number 5 pond. Pond का rhyming word. Pond. Bond. So again I will repeat. Run, burn, fun. 2 last, fast, past. 3 jump, bump, lump. 4 grass, class, brass. 5 pond, bond. So our exercise is completed. Students, I have explained all this exercise in this video. So student, you have to write in your notebook of all this exercise. I will send you PDF of all this chapter. Thank you so much and have a nice day.